चढ़ाने की बात है भूल जाओ। तुम मेरे ऋणी नहीं हो रहे हो, तुम्हें ऋणी नहीं चुकाना है। जैसे भरा बादल बरसेगा ही बरसेगा, जैसे फूल खिलेगा तो सुगंध उड़ेगी ही उड़ेगी, दीप जलेगा तो किरणें बिखरेगी ही। न तो हम बादल को धन्यवाद देते हैं, न फूलों को, न दीप को। बादल वर्षा तो धन्यवाद कोई आपस है, फूल में सुगंधी આવે तो कोई धन्यवाद धन्यवाद कोई કહે છે, દીપકનું અજવાળું છે તો કોઈ ધન્યવાદ આપે છે। तो उल्टे मैं ही तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुमने झोली फैलाई और जो फूल जरे उन्हें अपनी झोली में संभाल लिया, कि तुमने अपना आंचल फैलाया। समझ पड़े છે ને કે ઉપરથી ઓલો સત્પુરુષ ધન્યવાદ આપણને कि तुम्हें धन्यवाद देता, तुमने झोली फैलाई और जो फूल झरे उन्हें अपनी झोली में संभाल लिया, कि तुमने अपना आंचल फैलाया और फूलों को भूमि पर गिर जाने न दिया। आंचल એટલે આ બૈરાનો છેડો હોય ને એ, તમે ફૂલને નીચે પડવા ન દીધા। वर्षा तो होती ही, कोई ना संभालता तो भी होती। मेघ के वश के बाहर है कि जो उसके भीतर घटा है उसे संभाल रखे। मेघ के वश के बाहर है, जो उसके भीतर घटा है उसे संभाल रखे, उसे लूटाना ही पड़ेगा। तो जीवन का अनिवार्य नियम है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। इसलिए तुमने शब्द तो सुना है गुरु ऋण, लेकिन सच बात यह है कि गुरु के प्रति कोई ऋण नहीं होता और इसलिए उसे चुकाया नहीं जा सकता। माता का ऋण चुकाया जा सकता है, पिता का ऋण चुकाया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऋण है तो चुकाया जा सकता है। गुरु के प्रति कोई ऋण होता ही नहीं। चुकाओगे तो फिर कैसे चुकाओगे, इस चिंता में ही ना पड़ो। इसलिए आंसू जो बह रहा है एक प्रयास है, उससे सुंदर और कुछ भी तो नहीं। न उससे सुंदर गीत है, पृथ्वी पर में संगीत है, फूलों में होगा बहुत सुंदर, पर आंसुओं के सामने सब फूल फीके है। आंसू कह रहे अपनी कथा, अपनी व्यथा, उतना काफी। उन आंसुओं का नाम भी न दो, प्रीति को अनाम ही रहने दो। प्रेम को नाम देने से सीमा बन जाती है। अनंत है प्रेम, प्रेम नु नाम दो એટલે सीमा बन जाती है, शर्त लग जाता है, और जहाँ शर्त है वहाँ सीमा है, वही प्रेम दूषित हो जाता है। मीरा के ये शब्द प्यारे हैं, प्रेम निश्चित ही दीवाना है, इसीलिए चतुर वंचित रह जाते हैं। मीरा के शब्द प्यारे हैं, प्रेम निश्चित दीवाना है, इसलिए चतुर लोग, बुद्धिशाली चतुर विरंचित रह जाते हैं प्रेम से। उन ना समझो को, उन नादानों का पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी संपदा गंवा बैठे, कोटनो धंधो करो। ये तो अपनी अक्कड़ में ही रह जाते हैं, समझ की अक्कड़। ये तो अपनी बुद्धिमानी में ही धीरे रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि जीवन में एक और शराब भी थी। इसे पीते अमृत का अनुभव होता है कि एक और रसधार भी थी और पास बहती थी, जरा आंख भीतर मोड़ने की जरूरत थी। रसधार पासे थे न जती थी, मगर बुद्धिमान बाहर ही देखता रहता। बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धू व्यक्ति खोजने से नहीं मिलेगा। बुद्धिमानी એટલે बुद्धू, बुद्धू व्यक्ति खोजने मुश्किल है। बुद्धू इसलिए कि कूड़ा करकट को इकट्ठा कर लेता है, समझ है? कूड़ा करकट એટલે શું? बुद्धू इसलिए कि कूड़ा करकट को इकट्ठा कर लेता है।
પૂરા કરકટ એટલે આપણે જે વસ્તુ ટોપલામાં નાખી દે ડોલમાં, જ્યાં આપણું મકાન હોય ને એક ડોલ રાખે છે લોકો, બધી કાગળ એમાં નાખી દે, દિવાળ હળી નાખી દે. હવે એનો પૂરા કરકટ શું એ સમજાવે. धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा और जीवन के जो असली संपदा है, जो नाशवत संपदा है, उससे वंचित रह जाते हैं. प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी शाश्वत नहीं. शेष सब क्षण भंगुर, शेष बस यूं है जैसे इंद्रधनुष. दिखाई तो पड़ता है बहुत रंगीन, इंद्रधनुष क्यों लागे, दिखाई तो पड़ता है बड़ा प्यारा, मगर है वहाँ कुछ भी नहीं. मुट्ठी बांधोगे तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा. इंद्रधनुष में आम करो तो हाथ में कશું ના આવે. આપણે ભેગું કરેલું છે ને એ હાથમાં નહીં આવે. ભ્રાંતિ છે, ભ્રમણા. ઓલેનું ઓળખો નથી ને પરમાત્માને. પરમાત્મામાં પ્રેમ નથી એટલે આ બધું સારું લાગે. समझा है? शेष सब कुछ ऐसे ही जैसे सुबह की धूम में चमकते हुए ओस कण. સવારમાં તમે નીકળો એટલે ઘાસની અંદર પાણીના કણ હોય, ઓસ ચમકતા હોય ને. कुछ ऐसे ही जैसे सुबह की धूप में चमकते हुए ओस. कण लगे कि मोती ही मोती फैल गए. हाँ हाँ हाँ, मोतीना ढगला हमारा वीडियो भेगा कर लीजिए. आज दुख पर और पास जाओ तो कुछ भी नहीं. दूर से मोती है, दूर थी. पास जाओ तो मिट्टी भी नहीं. ऐसे ही हमारे धन है, पद है, प्रतिष्ठा और इस सब के पीछे चलने वाली दौड़ है. આપણે બોલે આપણે જતા રહેવા થઈ હતી ને, ત્યાંની પાસે દોડો એ થાકે ને દુઃખ મળે. शाश्वत पास दौड़ है, शांति सुखी. क्षणभंगुर पानी की बुलबुलो जैसी. बुलबुला એટલે પરપોટા. ધીમા उसी में अटक रह जाता है. धीवाड़ा मानसो एम अटकी जाता है. और रुपये ही गिनता रहता है और गिनते गिनते मर जाता है. कुछ जान नहीं पाता, कुछ जी नहीं पाता. अच्छा मारा रुपया लाओ भैया, पिया अटे मारा पिया लाओ. प्रेम है द्वार जीने का, जानने का. प्रेम एक अनूठा मार्ग है जानने का. एक मार्ग तो है शास्त्र ज्ञान, शब्द ज्ञान, और जानने का धोखा है. અને અગર જ્ઞાન ભરણ કશું નકામું છે. બોડીની કિંમત નથી. જ્ઞાનના પોટલા બધા પછી નાખી દે માણસ. इसमें सब बस प्रतीति होती है कि जाना और जानने में कुछ आता नहीं. पढ़ो वेद, पढ़ो कुरान, पढ़ो बाइबल, हो जाएंगे याद. तुम्हें शब्द दोहराने लगे. उन शब्दों पे सुंदर प्यारे शब्द है और दोहराओगे तो दुख को भी अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगेगा. हृदय में गुदगुदी होगी लेकिन खाली आए खाली ही जाओगे. तोतों की तरह दोहराते रहना राम 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 राम. तोता એટલે પોપટ. હિન્દીમાં સમજો છો ને, ભાષા હિન્દી મને બહુ ગમે. સમજણ પડે છે. ભણેલો નથી, હું ભણેલો નથી, પણ હિન્દી ભાષા બહુ ગમે. ઇંગ્લિશમાં જવા વિચાર કર્યો હતો, પણ પછી એવું લાગ્યું કે આપણી આ ભાષા અસલ સંસ્કૃતિ, આપણી સંસ્કૃત ભાષા એની હિન્દી છે. તમે ભણી જા ઇંગ્લિશ. 6 મહિનામાં તૈયાર છું. પછી આ ગેમ પછી આના રાખ. यूं ही मर जाओगे. बुद्धि से जाना नहीं जाता, जाना जाता है हृदय से, तर्क से नहीं जाना जाता. जाना जाता है प्रीति से. प्रीति है रीत जानने की, मगर बड़ी दीवानी रीति है. हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई. न मैं जानू आरती वंदन, न मैं जानू आरती वंदन, न पूजा की रीत. पूजा पूजा कर समझती नहीं. हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई.
વીરી मैंने दो नयनों के दीपक लिए संजोए, वीरी में तो प्रेम दीवानी, आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं है, मैं आपको क्या चढ़ाऊं। मीरा के आंसू सिवाय कशु सह नहीं, हूँ आपने शू चढ़ाऊं। तो यूं ही मर जाऊंगे, बुद्धि से जाना नहीं जाता, जाना जाता है हृदय से, तर्क से नहीं जाना जाता। तो इसलिए सिर्फ थोड़े से लोग ही हिम्मत जुटा पाते हैं, थोड़े से लोग ही साहस कर पाते हैं। कौन बदनाम हो, कौन डूबोवे इतनी लोक लाज। लोकोએ શું કીધું છે મીરાને વિચાર કરો, મીરા જુવાન છોકરા બોકરા એના નતા થયા, પરણેલી અને એ હવે સાધુઓ ભેગી રહેતી છે। તમે વિચાર કરો એ વખતે, અને રાજની બહુ फालतू હોય તો ઠીક, પણ આ તો રાજરાણી એનાથી માણસને આમ ધરના પડે। તો આમ આ સાહસ કેવું હશે, તો આમાં કંઈક હશે તો સાહસ કર્યું છે રજવાડું। कौन डूबोए अपनी लोकलाज, कौन रंग अपने को प्रीति में, कौन रंगे अपने को प्रीति में। क्योंकि प्रीति में जैसे ही तुम रंगे गए कि संसार तुम पर हंसेगा स्वभाव, क्योंकि तुम ऐसे काम करने लगोगे जो पूरे संसार को लगेंगे कि गलत है, व्यर्थ है, फिजूल है। आज एक बेन के हालो टीकरी आओ, ताकि अमार कशु दुख नहीं। कोना बैठा था बेन आवता थे कि मैं कीधुं कि हालो टीकरी आओ, अमार कशु दुख नहीं, दुख वाला जाए एक मंदिर महादेव के आश्रम हो या दुख वाला जाए, मतलब अमारे બધું સારું છે। પછી प्रेम संसार की समझ में आता नहीं, आ सकता नहीं। आ जाए तो संसार स्वर्ग ना हो जाए, संसार की समझ में घृणा आ जाती है, संसार की समझ में घृणा आ जाती है। प्रेम नहीं आता, युद्ध आ जाता है, शांति नहीं आती, विज्ञान आ जाता है, धर्म नहीं आता। जो बाहर है उसे तो संसार समझ लेना है, लेकिन जो भीतर है वो असली है, जो प्राणों का प्राण है, तो संसार की पकड़ से छूट जाता है। दृश्य तो स्थूल है, अदृश्य ही सूक्ष्म है, और वही है आधार। संसार तो दृश्य पटका होता है, दृश्य पर अटकता होता है। प्रेम की आंख अदृश्य को देखने लगती है। प्रेम तुम्हारे भीतर एक तीसरी आंख को खोल देता है, और स्वभाव जिनकी वैसी आंख नहीं खुली वे तुम्हें न समझ पाएंगे, तो तुम्हें पागल कहेंगे, मुस्कुराएंगे, वो कहेंगे कि गए तुम काम से, धंधा बंधा કર્યા हो तो कहीं भीगू था किया કર્યું હોત तो फैक्ट्री बैक्ट्री था जिन क्या ना लोगों हूँ आके थे। सदा उन्होंने यही कहा है, जीसस से उन्होंने यही कहा, बुद्ध से उन्होंने यही कहा, जरसुस ने उन्होंने यही कहा। इस जगत में जो भी चमकदार लोग हुए, जो भी हीरे हुए, वो सब मिट्टी हंसी, सब पर मिट्टी हंसी। हीराओं पर माटी हसी, तो माटी लोगों बोलिया मीरा नरसिंह तो ये हीरा, लेकिन मिट्टी बहुत है, उसके ढेर ही ढेर लगे हैं, और हीरा तो कोई कोई कभी कभी बिरला होता है। मिट्टी ने बहुत तरह से अपमानित किया है हीरो को, बदला लिया है हीरो से। बदला किस बात का? इस बात का कि हीरो की मौजूदगी में मिट्टी को बहुत दीनता अनुभव होती है, चोट पड़ती है, कचोट पैदा होती है। जानना और मानना के मैं मिट्टी हूँ अहंकार के विपरीत जाता है। भला माना इतनी माना ना खबर पड़े कि हमार छे शू आईडी का 4-5 एक हूँ અને 8-10 પાંહળા આટલી ભારી થાય નાની, અને બધું ભેગું કરીને મૂકો તો ચરબી, બીજું શું છે, ખોલી નાખો તો એક ભારી અટકા થાય, 2 કિલો ચરબી થાય, કિલો 2 કિલો પાણી,
બીજું શું ઊંડા ભરી દો પછી તો શું થાય? અને એની પાછળ આપણે માણસો દીવાના બની જાય. ભગવાનને મૂકી દીધું, ભગવાનને છોડી દીધું, અને આખર મળે નહીં પાછું. લ્યો, આખર કશું મળવાનું ભ્રાંતિ છે, સમજણ નથી. આમાં તો જો જે માણસ જાય, હવે એક માન લો, આગલા જન્મના જે બધા હતા ઘર ને મકાન ને એવું બધું, એનો હું કહ્યું આપણે આગલા જન્મમાં મૂકીને આવ્યા, મકાન તો હશે જ ને, કારણ કે આપણે થોડુંક આજનો જીવ ફરક છે. આ 2-5 વર્ષથી થોડો જીવ છે, 50-55 કે 100-200 વર્ષથી આ જીવ નથી. આ આનંદ એનો ગણતરી જ નથી, તારનો ભટકાય છે. એને તો કેટલાય ઘર કર્યા છે, કેટલાય પેલું કર્યું છે. એક છાટકો મોતમાં એટલે પડી જાય, તાશના પત્તા જેવું. ઘર મકાન બનાવે પત્તાનું, પછી એક પત્તું આમ કરે પડી જાય. એટલે અત્યારથી હજુ સમય છે હાથમાં, સમજી જવું હોય તો હજુ સમજી જાય. સમય ગયો જ્યાં માનવું. સમજવા જેવું કરવું એમ માણસને વિચાર જ નથી આવતો કે હવે હું કરશું, અહીંથી છૂટ્યા પછી ત્યાં જઈશું. એટલો વિચાર નથી આવતો. મરશું એટલે જવાનું થાય. ઊભા રહેવાનું તો કંઈક કરવું પડે ને, એ ચા જવાનું મર્યું પછી તો દફણા જ ખાવાના. કોકના કૂતરા જો થયા તો મારી બાજુ રોટલો બોલે હું દસ્તાન નથી આપતો પૂરી પેલાના હાથમાં હતું. સપનું આવે એનું તો માણસ અને બૈરું પા ઉતેલું પડે ખાટલાનું, અને બોલે હું કરવા પણ એ બૈરું હલાય કે શું છે શું છે. કે સપનું આવ્યું, એ શું સપનું? એવું તો સપનામાં કંઈક કૂતરો હતો કે બહુ ભૂખ લાગી ગઈ, 2-3 દાડા રોટલો નહીં મળેલો. પછી કે એક જગ્યાએ જોયો એટલે બાળકના હાથમાં પૂરી લઈને ઝડપી લીધી બાળકના ઓલામાં હાથમાં મોટર. પછી એના પપ્પાએ એના બાપાએ માર્યો પણ હતી કે 3-4 ગ્લોટિયા કંઈક ભૂલ થઈ ગયું. વિચાર કરો, સમજદાર છે એટલે કે તમારી તૃષ્ણા કામ કરે છે. આશા અને તૃષ્ણામાં આશા તૃષ્ણા સમજણી નથી પડતી. આશા કોને કહેવાય, તૃષ્ણા કોને એમાં મરી જાય. પછી આ બધા છે તો થોડાક દાડા ઘડી 2 કલાક 5 કલાક રોવે. આના આપણે મરી ગયા હોય 4 વાગે, પછી 5-6 વાગે પતાવી દે. 8 વાગે એટલે ભૂખ તો લાગે, વીજળી ગાવી જ પડે. ગમે એવું હોય તો શું કહીએ. પછી ઓલા અંદર તો ખાવાનો ભાવ હોય, ભૂખ લાગી હોય તો એ તો પ્રાણના ધર્મો છોડે જ નહીં. બીજા ના અમારે ખાવું જ નથી ગયું, ના ખાય તો તું પરમ દાડે તો કહીશ નહીં, ત્યાં સુધી નહીં. એ રિવાજ કેવા બીજાને ઘરે જ લાવે, ખબર આવે ગોરખ ધંધા છે બધા. પછી કોણ નથી ખાતું, કોણ બીજા સુખ નથી ભોગવું? બધા સુખ એમ છે. સપનામાં મોહનથાળ ખાય તે બધું બનાવી શકું. પ્રકૃતિ છોડતી જ નથી. પછી સમજાય છે વાત? એટલે પરમાત્મા સિવાય કોઈ છે જ નહીં પોતાનું અંશ ઈશ્વરનું. આ આખી પ્રકૃતિનો ખેલ છે, નાશવાનનો ખેલ. ઓલું શાશ્વત, ઓલું બિંદુ જે છે ને સિંધુમાં જવા પ્રયત્ન કરે. અગર સિંધુ બિંદુમાં આવે એ એક છોડી દેવામાં વાર મૂકી દે.
અત્યારે નીકળી દો અને આમ છોડવું હોય તો છૂટી જાય. આપણે મારે કેટલી હતી કે આના પર બધું મૂકી નકરો જાણી કરીને જવાનું વાર શું. અને આમાં તો છોડવાનું આવતું જ નથી ને, આ વસ્તુમાં છોડવાનું જ આવતું નથી. ભગવાન હારે પ્રેમ જ કરવાનો. નાશવાન વસ્તુમાં જે પ્રેમ છે શાશ્વતમાં જોડી દે. આને ગૌણ ગણાય, પરમાત્માને મુખ્ય ગણાય, ભગવાનને. પછી ગોપીઓને કેટલું બધું છોડીને જતી રહી. તો ગોપીઓ, મીરા, નરસિંહ મહેતો, સાથે ઘણા બધા રાજા ભરતોરી, ગોપીચંદ, દિલીપ, વિશ્વાપુ, સુધનવા. આ જન્મમાં જ કામ કરી દેવું જોઈએ. પછી સારું થશે. પેલા આ કામ કરાય, પછી સંસાર મંડાય માંડવો. પેલા પરમાત્માને મેળવી લે, પછી સંસારમાં કરવું હોય તો કરાય. બધું જે કરવું. અષ્ટાવક્ર બાપજી પેલા આ કરી લીધું, પછી જનક રાજાને ગુરુ બન્યા, પછી ફરીને અષ્ટાવક્ર શાશ્વત જાણી લીધા પછી વાંધો આ નકર મારે. મન રહ્યું ને એ સારું, એટલું બધું અંદર ખોટું કરે છે કે વાત નહીં. આના હાટું છે નાશવાન ચીજ વસ્તુ હાટું પોતાનું ક્ષેત્ર આપણે એટલે પોતે જ ને પોતાને આપણે જેતરી જેવા લાગીએ. એટલે સમજીને માણસે કરી લેવું જોઈએ આ વાત. એટલે હું તમને થોડુંક આપીને પછી રવાના કરી નાટી. अहंकार ये मानने को राजी नहीं है. हटा लो इन हीरो को, मिटा दो इन हीरो को, कह दो कि ये पागल है. इसलिए जीसस को लोग विक्षिप्त समझते हैं. જે આ માર્ગ ઉપર હતા એને લોકો એમ કહેતા ગાંડા है. बुद्ध को लोग पागल समझते हैं. समझेंगे बुद्ध से ही हमारा बुद्धू शब्द बन गया. बुद्ध से हमारा बुद्धू शब्द बन गया. निश्चित ही लोगों ने कहा कि बुद्धू इतना राज था, धन था, संपदा थी, सुंदर स्त्रियां थी, सिंहासन था, अकेला बेटा था बाप का, एक सिद्धार्थ एक सुनिश्चित अधिकारी था. इस सारे सुख सुविधा वैभव को छोड़कर कोई जंगल में चला जाए, बैठ जाए वृक्ष के नीचे आंख बंद करके, बुद्धू न कहोगे तो और क्या कहोगे. લોકો બુદ્ધુ જ કરે. આટલું બધું રાજ છોડી નાખો, આટલું બધું જંગલમાં જતો ગાડું કહેવાય, પાગલ નહીં એવું કે. जिन्होंने जाना उन्होंने बुद्धू कहा, जिन्होंने पहचाना उन्होंने बुद्ध कहा, इन्होंने बुद्ध कहा. लेकिन भीड़ ने तो बुद्धू ही कहा. भीड़ इतना ज्यादा मानता है. बुद्धू शब्द की उत्पत्ति बुद्ध के साथ है. फिर बुद्ध को देखकर, बुद्ध की उमंग में आकर, बुद्ध के कुमार में आकर और भी कुछ दीवाने चल पड़े. तब तो लोगों ने कहा ये भी हुए बुद्धू, ये भी है पागल. बंगाल में मस्तों की एक परंपरा हुई है. बाउल बंगाल में मस्तों की एक परंपरा हुई है. बाउल का अर्थ ही होता है बावला, पागल. सूफियों में जो पहुंच जाता है उसको मस्त कहते हैं, अलमस्त. वह डूबा रहता है मस्ती में परमात्मा की. जैसे एक अलमस्त ने, अमर खयाम ने रुबाइयात लिखी. लोग समझे ही नहीं. लोग समझे कि ये शराब की बात हो रही है. मधुशाला और मधुबाला और पीने वाला और पीने वाला. ये बात शराब की हो रही है. यह बात शराब की नहीं थी. यह बात तो उस परम आनंद की थी. शराब और परम आनंद में कोई फर्क नहीं. फर्क એટલો કે ઓલો નાશ તરફ લઈ જાય, ઓલો શાશ્વત. પરમ આનંદ એટલે એ વાત પૂરી થઈ ગઈ.
ये उमर खयाम तो एक मस्त है, एक सूफी अलमस्त, लेकिन उमर ख्याल को समझा ही न जा सका। सदिया बीत भी हम समझते ही नहीं प्रेम को। इसलिए बेचारी मीरा कहती है कि एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मेरे भीतर कैसी पीड़ा उठ रही है, यह सोच करके मुझे कोई नहीं समझ पाता। मेरे इस दर्द को कोई भी नहीं समझ पा रहा है। मुझे याद उठती है, मुझे दया आती है, मुझे सहानुभूति होती है, करुणा होती है ना समझो पर, जो अपने को समझदार मान बैठे हैं, जो खुद पागल है और मुझे पागल समझ रहे। मीरा जो खुद वस्तुत विक्षिप्त है और मुझे विक्षिप्त मान रहे, मेरे हृदय में इनके लिए बहुत दर्द उठता है। फिर ये न समझ सकेंगे कि क्या समझेंगे। अंधा क्या समझेगा प्रकाश को? गमे इतनी मेहनत करो दवाई, अंधा क्या समझेगा प्रकाश को? जिसने प्रेम नहीं किया वह प्रेम को क्या समझेगा? और प्रेम का दर्द बड़ा मीठा दर्द है। तुमने दर्द तो बहुत देखे, लेकिन प्रेम का मिठास से भरा हुआ दर्द नहीं देखा, तो फिर कुछ भी नहीं देखा। आए खाली हाथ, गए खाली हाथ। मीरा ठीक कैसे न मैं जानू आरती वंदन, न पूजा की रीत। प्रेम मानता ही नहीं औपचारिकता। प्रेम औपचारिकता में मानता नहीं। औपचारिकता आ विषय હું બોલ્યો હતો મથુરા, નાવાનું ધોવાની આન તેન મંદિરમાં જાય તો કે આવ્યું છે ને બાપજી, આમ તો પડ્યું છે, પાણી નથી ટપકતું, પાણી જોવાયો છું શંકર ઉપર। આને રામકૃષ્ણ પરમહંસનો પૂજારી તરીકે રહેતા હતા। એ આખો દાડો પૂજા કરે, કોઈક દાડો 2 મિનિટ કરે, કોઈક દાડો ના કરે। થોડા ટ્રસ્ટીઓ કે આવું કેમ કરો? તો કે ભાવ થાય તો કરું તો તમારી જોડે 4 વાગે 5-7 વાગે આમ કરી લેવાનું, ટોકરી વગાડી, એવું થોડું છે કે સમજાય છે ને? કાં તો માણા રાખે પગારદાર, પૂજા કરે। આ શામળાજી પૂજારી છે એનો ભાવ થાય, એને પેલા આવી નોટો બધી પડતી હોય એના આવી દ્રષ્ટિ લાંબી 1000ની 500ની પડે, ભગવાને આમી નજરે ના હોય, ભગવાન આમી ના હોય નજર એમ। પછી મેં એમ કીધું તમે આ નાવા ધોવાનું 4 વાગે ઉઠી જાઓ, નાનું એવું નહીં કીધું। ગમે તારો ઉઠો મોજ પડે, તારો કોટલું લોહી ના પીશો, ગરમ લાગશે, ખોટા મરી જશો, ભૂકા નીકળી જશે। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, किसी का प्रेम मत तोड़ो। संडास जता जता परमहंस हाथ पानी लीधा वगैरह महाकाल गद भरी लेता, माँ माँ करता उठे दौड़े, पानी पी पासा कान में आवे तो पासा जाए। તમે નાવા ધોવાની ફૂલ નાન તે ફૂલ આપો, મન સુમન સારું મન છે, ફૂલ સળાવો બધું। પબ્લિક શું સમજાય? પછી સગુણ કે શું સગુણ નિર્ગુણ? તમને સગુણની ખબર નથી, નિર્ગુણની ખબર નથી। શું સગુણ કહેવાય, શું નિર્ગુણ કહેવાય? પરમાત્મા સગુણ નિર્ગુણથી એ તો બુદ્ધિનો વિષય છે, સગુણ અને નિર્ગુણ સમજાવું। એટલે આ પ્રેમ વસ્તુ એવી છે। સદગુરુ ભગવાન કી જય। લો આયા તો આટલો નફો થયો, કોર્ટમાં ધંધો થતો।